Hello students, today I'm back with my another video, the poem Night of the Scorpion by Nissim Ezekiel. So as first of all you are seeing here the first stanza. I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. So in the first stanza, the poet says that he remembers well that night when her mother was stung by a scorpion. जब उसकी मदर को एक स्कॉर्पियन के द्वारा काट लिया जाता है. The poet is of the views that the heavy rain, which lasted for 10 hours, made the scorpion crawl beneath a sack of rice. और जो ये स्कॉर्पियन है वो भी क्रॉल करता करता beneath a sack of rice के और we can say जो चावल की बोरी है उसके नीचे चला जाता है. The last phrase in this stanza is showing that the poet's sympathy towards a scorpion, as we are seeing, crawl beneath a sack of rice. Okay, so in our next stanza, parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. So in second stanza, the poet says that after biting his mother with its diabolic tail, the scorpion went back to rain outside again. तो वो जो स्कॉर्पियन है वो दोबारा वापस बाहर चला जाता है रेन में. The poet here shows, the poet यहाँ पे शो करता है sympathy as well as an anger towards the scorpion. एक टाइप की एक sympathy भी है, anger भी है, जहाँ पे उसे गुस्सा भी आ रहा है, पर वो उसके लिए sympathy भी represent करता है इस poem में. He is angry when he talks about its biting and sympathetic when he talks about it's going to rain again. वो दुख इस बात का उसे होता है कि उसने मेरी मदर को काटा. But on the other hand, he is also feeling so bad कि हाँ वो रेन में दोबारा बाहर चला गया. The next is, the peasants came like swans of flies and buzzed the name of a god 100 times to paralyze the evil ones. Now what happened when the people heard about this incident? The villagers rushed to poet's home. However, he is not happy with them कि ये कहाँ से आ गए, ये क्यों आ गए, and calls them swans of flies. और वो कहते हैं उन्हें कि ये मक्खियों का झुंड है. Who buzz the name of a god 100 times to paralyze the evil one. और जो superstitious बातें करते हैं, if we will just try to name a god of 100 times, then definitely we will paralyze the evil one. So they were just thinking about this. So the poet was not happy with them कि ये लोग क्या कर रहे हैं and why they are just saying so. Now in next you can see, with candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him. He was not found. Now the poet is here trying to explain us that how the villagers searched for the scorpion. According to him, the villagers began searching for the scorpion and their shadows themselves, like they were using their candles, lanterns. तो वो ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे थे, और जब वो ये चीज़ों को वहाँ पे अपने साथ लेके जा रहे थे एंड वो मड बिग वॉल्स में हम उनकी जो है एक टाइप की शेडोज़, लाइक स्कॉर्पियन शेडोज़ टाइप, उनकी वहाँ पे वॉल्स पे देख सकते थे. द पॉइंट वॉज सेइंग कि मैं सब कुछ देख रहा था कि कैसे उनकी शेडोज़ जो थी एज ए स्कॉर्पियन जो बेक्ड वॉल्स पे बनी हुई थी, आई वॉज सीइंग दैम कि वो कैसे बिहेव कर रहे थे. एंड अकॉर्डिंग टू दैम दे वर जस्ट जाइंट स्कॉर्पियन ऑन द मड बेक्ड वॉल्स, जो ट्राई कर रहे हैं कि हम स्कॉर्पियन को जो है फाइंड आउट कर सकें. ओके, सो नेक्स्ट इज दे क्लिक देयर टंग्स, और वो अपनी टंग को क्लिक करते हैं, लाइक वी आर सेइंग ना, जस्ट वी ट्राई टू मेक अ नॉइज लाइक what happened with you, oh my god. हम जब ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, so the same condition was with the villagers, so they were just clicking their tongues. With every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. अब उनकी एक बात और शुरू होगी कि जैसे जैसे मूवमेंट जो स्कॉर्पियन की होगी वैसे वैसे ही उसकी मदर के ब्लड में जो पॉइजन है वो भी मूव करेगा. सो ये जो थिंकिंग थी, दैट वाज अ थिंकिंग ऑफ द विलेजर्स.
क्योंकि उन्हें इस चीज़ के बारे में पता था कि जो ये है जो पॉइजन है स्प्रेड अक्रॉस द बॉडी विद द मूवमेंट ऑफ स्कॉर्पियन. सो इफ द लेटर इज स्टॉप्ड एंड पैरालाइज द पॉइजन इफेक्ट कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड. तो ये उनका मानना था. ओके, सो द नेक्स्ट इज may he sit still, they said, may the sins of your previous birth be burned away tonight, they said, may your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. Now as you are seeing here कि जो उनकी सुपरस्टिशियस बातें हैं उनको निसिम जो थे वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे. दैट इज़ वाई ही हेट्स द कमिंग ऑफ विलेजर्स टू हिज होम. Also, the stanza depicts the indolence that prevails in a number of other poems as well. तो वो जैसे ही ट्राई करते हैं कि उसे फाइंड आउट किया जाए, बट फर्स्टली वो ये इस चीज़ के लिए स्टिल वो सोचते हैं कि जो उनकी मदर के पिछले जन्म के कोई पाप किए हुए हैं वो धुल जाएंगे. बी बर्न्ड अवे टुनाइट, मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ नेक्स्ट बर्थ, दे सेड. और दे वर ऑल्सो थिंकिंग कि जो उनके डिक्रीज़ होंगे, जो उनके पाप हैं वो डिक्रीज़ होते जाएंगे धीरे धीरे, जो उनकी मिसफॉर्चून्स होनी है नेक्स्ट बर्थ की. मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन. सो दे वर जस्ट थिंकिंग कि जितना आज तुम पेन ले रही हो, तुम अपनी लाइफ के जो आगे फ्यूचर के आने वाले डेज़ हैं वो उनको आप अच्छी तरह से क्लियर कर रहे हो. बिकॉज़ जो आप आज पेन से गुजर रहे हो वो पेन आपको इन फ्यूचर जो है आपके लिए पुण्य वाली होगी. ओके, सो नेक्स्ट दे वर सेइंग, दे सेड दैट दे सैट अराउंड. और जैसे जैसे वो बोलते गए वैसे वैसे उन्होंने बैठना शुरू कर दिया उनकी मदर के पास. So on the floor with my mother in the center. So वो सारे सेंटर में बैठ चुके थे. So as firstly they were saying कि other assume कर रहे थे that she is going to die, भी वो मरने वाली है, and said that the pain that she is suffering from will decrease the troubles in her next month. तो इतना नहीं होगा नेक्स्ट बर्थ में उसकी अगर जितनी जितनी उसको ट्रबल्स आ रही हैं, पेन आ रही है. तो सम others put forward that her good deeds will be balanced, right, against her bad deeds because of the bite of the scorpion. तो देखो कितनी सुपरस्टिशियस बातें कर रहे हैं. सिर्फ एक स्कॉर्पियन के कट करने से अगर पाप पुण्य का उनका एक तरह से बैलेंस वो बता रहे हैं. सो हाउ सुपरस्टिशियस वुड बी दैट काइंड ऑफ पीपल. सो वी कैन जस्ट assume through this poem. So some of them were saying that poison will purify and refresh your flesh of desire, as you are seeing here that on the floor with my mother in the center, the peace of understanding on each face. सब लोग शांत बैठे थे. More candles, more lanterns, more neighbors, more insects and endless rain. And still जो थी लोग आते जा रहे थे lanterns लेके, candles लेके, ज़्यादा से ज़्यादा neighbors, जितनी ज़्यादा बारिश उतने ज़्यादा इंसेक्ट्स थे वहाँ पे. My mother twisted through and through groaning on a mat. तो जो मेरी मदर थी मैं उसका पेन देख पा रहा था, वो कैसे ट्विस्ट कर रही थी बार बार मैट के ऊपर. माई फादर स्केप्टिक रेशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग. जो मेरे फादर थे बहुत ज़्यादा शक्की टाइप, जो हर चीज़ में अपना लॉजिक लगाते थे. तो उन्होंने ट्राई किया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं. सो ही वॉज जस्ट डूइंग सो, वो कर भी रहे थे. मोर एंड मोर पीपल कम विद कैंडल्स एंड लैंटर्न्स एज ही नो. बट however his mother was crying and rolling on the mat with the severe pain, but nobody cares for her except for his father. क्योंकि उसके फादर के बिना उनकी केयर किसी ने की. बिकॉज सब जो वहाँ पे जाकर सुपरस्टिशियस बातें कर रहे थे. वो स्केप्टिक, बट उसके फादर जो थे स्केप्टिक थे, रेशनलिस्ट थे. ही लीव्स नो स्टोन अनटर्न टू क्योर हर. सब कुछ किया उन्होंने, सब तरह के उन्होंने लीव्स जो थे वो अप्लाई करके देख लिए. He uses powder, mixture, herb and hybrid to help her recover from the pain. As you are seeing here that he was using powder, mixture, herb and hybrid. Okay, so he even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with him with an incantation. Now the poet is saying that my father was using powder, mixture, herb and hybrid to help her recover from the pain.
He even poured a little paraffin upon the bitten toe and then fires it up. The poet watched the flames of fire burning on the skin of his mother. बिकॉज जब भी उन्होंने पैराफिन उनके टॉ के ऊपर रखा, सो उन्होंने उसके बाद मैचेस के जो तील थी उसके ऊपर रख दी, सो दैट वो बर्न होना शुरू हो गया. तो जो पोइट था वो फ्लेम्स देख रहा था अपनी मदर की स्किन में से, एंड ही वॉज वेरी सैड कि मेरी मदर के साथ ये क्या हो रहा है. बट हिज फादर वॉज कैप्टिव टाइप पर्सन, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे रादर देन द विलेजर्स हु वर जस्ट गिविंग अ सुपरस्टिशियस थिंग्स इन फ्रंट ऑफ poet, and he was not satisfied with the things that they were doing. Okay, so next is he also was a holy man. तो वो एक holy man को भी देखते हैं. Perform his rites to tame the poison within an incantation. तो वो एक विलेजर में टाइप के जब सुपरस्टिशियस चीज़ों को देखते हैं, तो आफ्टर दैट ही वॉज ऑल्सो सेइंग अ होली मैन एक वहाँ पे थे जो परफॉर्म कर रहे थे his rites to tame the poison with an incantation. The phrase again refers to superstitious people of his village who believe in irrational measures to cure a person. Okay, so the next is, my mother only said, and after 20 hours it lost its sting. और after 20 hours जो थे उसकी जो मदर थी उनको थोड़ी सी राहत मिलती है. after 20 hours it lost its sting. तो वो जो उनका जहर होता है वो वहाँ से निकल जाता है. एंड माई मदर ओनली सेड, और मेरी मदर लास्ट मोमेंट पे भी यही कहती है, थैंक यू गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि गॉड थैंक्स लॉट कि जो स्कॉर्पियन है पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर माई चिल्ड्रन, जिसने मेरे बच्चे को बचा लिया और मेरे पे अटैक किया, लाइक मेरे को उसने बाइट किया. Okay, so the last line we can say, the last line is quite emotional and heart-touching. It reflects the motherhood of a lady. The poet says that after recovering from the poison, his mother's words were, thank God, the scorpion picked on me and spared my children. So even in a such condition, his mother remains more concerned about the safety and health of her children. So students, that was her poem Night of the Scorpion.